हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आल्स के टीवी। आज आपके लिए मैं नेक्स्ट क्यू कार्ड लेकर आया हूँ। द नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ फोटो दैट यू आर प्राउड ऑफ। देखो कोई फोटो बताओ जिस पर वो प्राउड मोमेंट फील होती हो। एंड योर क्यूज आर व्हेन डिड यू टेक दिस फोटो एंड व्हाट इज द फोटो अबाउट, व्हाई यू फील प्राउड ऑफ दिस फोटो। कहते आपने ये फोटो कब ली थी, कहाँ पे ली थी, एंड ये आपको फोटो क्यों प्राउड मोमेंट फील होती है। ओके, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। जैसे ही कोई पर्सन होता है वो यानी कैसे करता है कि यानी कि उसको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। घूमने फिरने का जब शौक होता है उस पर्सन को हम हॉडोफिल पर्सन कहते हैं। ओके, तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हो कि जैसे कि मैं हॉडोफिल पर्सन हूँ। आई रिसेंटली व्यू द मैनी ऑफ द प्लेसेस सच एज द हिमाचल प्रदेश एंड मैनी प्लेसेस, बट आई लव टू डू द ट्रैकिंग इन द माउंटेन एरियाज। तब आप जा सकते हो अपने फ़ोटोज़ कहाँ ऐसी ली थी। कई बंदे होते हैं वो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं, कई अपने फैमिली के साथ जाना पसंद करते हैं। आप कोई भी आइडिया लेकर आ सकते हो। ओके, जो मैंने बनाया हुआ लास्ट मंथ हिमाचल प्रदेश गया था इन द ऑबिसेंस ऑफ द माता रानी, तो मैंने वही आइडिया आप यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Photography is my passion and I have a keen interest in photograph and I love to capture my memories with the camera. ओके, हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दी है। वन एवर आई गो टू न्यू प्लेस आई कैप्चर लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ फोटो दैट मेक्स मी अ प्राउड। लास्ट मंथ आई विजिटेड हिमाचल प्रदेश। ओके, जैसे मैंने आपको आइडिया में बताया था कि मैं कहाँ पे गया था, हिमाचल प्रदेश, उसके लिए रिलेटेड ही मैं बना रहा हूँ आगे। टू पे ऑबिसेंस, ऑबिसेंस मतलब होता है मत्था टेकना, जिन्हों आप पंजाबी च कहते हैं। ओके, एट अ हिंदू टेम्पल, it is a really a beautiful hill station. I went there with my best friend Money. When we were coming back from the temple, we stopped at the Bombay picnic stop. एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का नेम है यहाँ पे, वंडरलैंड, काइंड ऑफ वंडरलैंड ये बना हुआ है। ओके, Money was taking the camel ride there. Suddenly, I took this photo with my Oppo A55. Interestingly, it was not a pre planned picture. Actually, the background view behind him was amazing. There was a beautiful sunset view between the two mountains. I felt I had to click picture. When I showed him his picture, he felt over the moon. ये मैंने idiom use किया very happy के लिए. Basically, he is not too much interested in photos, but on that day, he was happy with that picture because it was a somewhere different picture with mountain and sunset view. Moreover, he also appreciated to me my photograph skills. All in all हम तब यूज़ करते हैं जब आपने एंडिंग करनी हो। ओके, जैसे आप कहते हो लास्ट बट नॉट लिस्ट, उसकी जगह आप ऑल इन ऑल यूज़ किया और ये ज़्यादा बेटर होता है। ओके, I feel proud because all in I got the appreciation from a person who does not like to take the photos. Also, I am also proud that I clicked the beautiful photo. Suddenly, he framed that photo and hanged on his room wall. ये मेरा आइडिया था। इसके अलावा आपके पास और कोई आइडिया हो तो वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। For more updated with the IELTS and recently asked Q card, please subscribe my channel and stay tuned. Thank you.